यस मैम होती है। ओके। अच्छा जी, चलो. So as I said, we'll be building on the theoretical development of the simplex method now. But before that, let us, we'll be talking of two things more here before we formally start the proofs. One is what we call as the convex sets. Have you ever heard of convex sets? क्या होते हैं कॉन्वेक्स सेट? कभी पढ़ा है, कहीं सुना है? हाँ या नहीं में बता दो. नो मैम. नो मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम. ये यस कौन बोला? लास्ट सेमेस्टर एलपीपी वाले। अच्छा, नहीं ठीक है, उनसे नहीं पूछ रही मैं. ठीक है, आजा. कॉन्वेक्स सेट अभी भी सबकी बात करते हैं. ओके, कॉन्वेक्स सेट नहीं पढ़ा क्या? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पढ़ा है ऑफ वेक्टर्स, एलपीपी वालों को छोड़ के? हाँ या नहीं, जल्दी. नो मैम. नो मैम, ठीक है. क्या लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. यस मैम। यस मैम. यस मैम, ठीक है ना. अब say supposing you have x1 x2 xn, supposing they are your vectors, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन करते हो? Say you incorporate some scalars lambda 1 lambda 2 lambda n and an expression of this form. इसी को ही बोलते हो ना लीनियर कॉम्बिनेशन. यस मैम. यस मैम। अब तुम a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn कह लो, या lambda 1 x1 प्लस lambda 2 x2 प्लस lambda n xn कह लो, एक ही बात है ना. ठीक है, but only thing we have to understand is that x1 x2 xn are vectors and lambda 1 lambda 2 lambda n are scalars, any scalars. So such a combination is said to be a linear combination of these n vectors. अब इसी linear combination में सपोजिंग मैं एक और कंडीशन इनकॉर्पोरेट कर लूं, दैट all these scalars, they must add up to 1. Are you getting the point now? That means you have a combination of the form lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda n xn, where lambda 1 lambda 2 lambda n is equal to 1. Okay, then such a combination of vectors is said to be a convex combination. Okay, now we say that, say supposing you have any set. Now set is what? A collection of vectors. Okay, na? Collection of elements which satisfy some basic standard property which is common to all of them. Okay. Now if S is any set, okay, of vectors, कहीं पे भी ले लो, R2, R3, Rn, किसी भी n dimensional space में ले लिया हमने. And if I say x1 and x2 are any two elements of S, random elements of S, and it so happens that their convex combination also belongs to S, where lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1. So basically, what does this mean? Lambda 2 is nothing but 1 minus lambda 1. So instead of saying lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 belongs to S, I can also write it as lambda x1 plus 1 minus lambda x2 also belongs to S. एक ही बात है ना? Because I am talking of just a convex combination of any two vectors belonging to that set. Is this clear? Right? Am I clear or not? Or Yes ma'am. right? Yes So ma'am, it is clear. if this also belongs to S, then S is said to be a convex set.
Okay, that means a set of vectors will be convex only if any two for any two vectors belonging to that set, their convex combination also belongs to that set. Now, what does this mean? Geometrically, what does this mean? See, this actually convex combination is nothing but, say, supposing you have any set. Say I take a triangle here, right? And in this set, if I randomly pick up any two elements, say I pick up x1 here and x2 here, okay, then lambda x1 plus 1 minus lambda x2 for a specific value of lambda is nothing but the line, straight line joining these 2 points. Okay, so basically, when we say that a set is convex, this amounts to saying that if I randomly pick up any 2 points from that set, then the straight line joining those points will also belong to that set. Okay, you randomly pick up any 2 point, kahin pe kuch bhi le lo. In this triangle, it will always happen. But say supposing I have some quadrilateral, something like this. Something like this. Now, it has how many vertices? A, O, A, B, C, and D. See, this is how your feasible region actually looks like. Closed set, something like this, right? And you pick up any two vectors, any 2 points in this region, this set that I have considered, the straight line joining those 2 points will always be there. Kahin pe bhi le lo, this point, this point. This is the straight line joining. You take up this point, this is the straight line joining. This line, randomly if you pick any 2 points, then the straight line joining them also belongs to that set. So that is why this is a convex set. In fact, that's why we say that the feasible region in any linear programming problem is actually a closed convex set. But in case of unbounded solutions or unbounded feasible region, we have seen that it fails to be closed, but it is always convex. Even if you have an unbounded solution, your feasible region is always a convex set. But see, if you have something like this, say, छोटा सा बनाती हूँ मैं. Say, supposing you have a region like this, set like this. Is it convex? No, ma'am. No, ma'am. I can pick up 1 point here, 1 point here. The straight line joining these 2 points does not belong to that. So this set is not convex. And you will see that your feasible region will never end up in a structure or in a shape like this. So that is why convex sets are important in linear programming or in the development of the simplex method. Okay. Now, once we have a convex set, then we say that a point P, see, before we begin, we need to identify certain terms. I mean, what do they actually mean? We say that a point P of a convex set is said to be an extreme point. I'm writing the definition actually because you should be knowing it. Okay, is said to be an extreme point if each line segment that lies completely in S and contains P has P as an endpoint. Has P as an endpoint. Okay? So that means, say, like for example, let us construct that feasible set again or that convex set again. कुछ भी ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं इससे, यही ले लिया हमने, ठीक है, ये some sort of a pentagon type, ठीक है ना? Now, of course, for a layman,
what do we mean? Or for geometry, if you know the basic geometry, then what are the extreme points? The vertices of this closed region. ठीक है ना? But what is a vertex actually? Vertex, see, that's what the algebraic definition of an extreme point says. क्या कह रहा है वो? A point P is said to be an extreme point if what happens? Each line segment that lies completely in S, right? वो line पूरी की पूरी हमारी S के अंदर है and contains P. So if you have this point, if I take this point as P, then this is a line segment, this is a line segment, this is a line segment, this is a line segment that lies completely in S. कहने को ये भी हो सकती है. But then this line segment does not lie in S. So we are not going to consider this line. So at the most हम कहाँ आ सकते हैं यहाँ पे? ठीक है ना? Otherwise all other line segments which lie completely in S contain P, they have P as an endpoint. So then P is said to be an extreme point. So basically that is what we mean by vertices. They are the endpoints. अब जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा उन्होंने ग्राफ थियरी भी पढ़ी है ना, ठीक है? तो अब उसमें हम क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? एज ऑफ अ ग्राफ, राइट? व्हाट आर दे? दे आर द वर्टिसेस ऑफ दैट ग्राफ. सो बेसिकली अगर हम इसको अपना एक ग्राफ माने या कुछ भी सेट माने, तो ये हमारे जो वर्टिसेस हैं, जो एंड पॉइंट्स ऑफ दीज एजेस है, they are the extreme points. But algebraically, this is how an extreme point is defined. And this is what we have seen. जो हमने graphical plot भी करा feasible region, तो हमने end points तो इन्हीं को ही माना ना, जो भी हमारे extreme points आ रहे थे, right? And as we said that, yes, I mean, see, हमारे पास जब हमने graphically उनको solve करा, हमने उनको अपना basic feasible solution बोला. And we said that an optimal basic feasible solution will always exist at these extreme points or the end points, right? और उसको हमने किया. तो अब इसको अगर हम algebraically करें या प्रूव करने की कोशिश करें, तो बेसिकली जो हमारी थियरम है वो क्या कह रही है? वो कहेगी, now this is what we are actually going to prove now, that every basic feasible solution is equivalent to an extreme point. ठीक है ना? अब इक्विवेलेंट का मतलब टू वे रिलेशन हो गया ना, कि मतलब every basic feasible solution is an extreme point and conversely every extreme point is actually a basic feasible solution. So तभी तो दोनों इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश हो पाएगी हम इन दोनों के बीच में, राइट? सो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप दैट वी नीड टू प्रूव. ठीक है? नॉट जस्ट दिस, इन फैक्ट, you know, we have, I mean, of course we are not proving those results, we are saying that, see, जैसे हम ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा, see, why this helps us is graphically we have seen that there are only, जो हमारा, no matter how many constraints do we have, if we were working with two variables only, we have seen that the feasible region always ends up with some closed convex set and it has only finite number of extreme points. Otherwise, जो हमारा feasible solution बना था, उसमें जितने भी points थे, इस पूरे region में कितने points lie करेंगे? Infinitely many. और वो सारे के सारे feasible solutions हैं. But हमको optimal feasible solution निकालना था, और क्योंकि ये सारे feasible region के अंदर lie कर रहे हैं, ये सारे के सारे basic भी हैं. तो अब क्योंकि हमको optimal भी निकालना था, तो इसका मतलब हमको इनमें से सिर्फ उतने चुनने हैं ना जिनको हम आराम से हैंडल कर सके. और वो हमने क्या बोला कि जितने एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन्हीं पे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई करेगा. ठीक है? तो तभी तो हमने उनको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोला. अब क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट लिमिटेड नंबर में थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक सॉल्यूशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या उल्टा बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जो भी फिजिबल रीजन में लाई कर रहा है वो फिजिबल सॉल्यूशन है.
लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस तो हमारे पास लिमिटेड हो गए ना, फाइनाइट नंबर हो गया। और क्योंकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइनाइट हैं तो उनमें से ऑप्टिमल ढूंढना फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलेक्शन ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस we can conclude that if an optimal solution exists, then an optimal basic feasible solution also exists, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश कर दें कि ये दोनों बराबर हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो हमारा काम हो गया। That's what we are going to do in this. That is why this is the major theorem, that we need to prove. तो अब इसको प्रूव करने के लिए, since I'll be following this approach only, which is given in this book, proof थोड़ा सा डिफरेंट तरह से कर रही हूं मैं, क्योंकि जो बुक में जिस तरीके से दिया हुआ है हमको फिर उसमें पूरा हाइपरप्लेन्स का कंसेप्ट भी समझना पड़ता, which I am not going into the details. That's why I am taking up a simpler proof for this theorem. Firstly, secondly, हम क्या मानकर, एक और चीज जो हम मानकर चलते हैं, अभी देखो हमने जो प्रॉब्लम्स कंसिडर किए उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का था, मैक्सिमाइज z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू, अब हम अभी इक्वालिटी मानकर चल रहे हैं इसमें, एक एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स मोर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन इफ आवर कंस्ट्रेंट्स वर लेस देन और इक्वल टू टाइप्स और मोर देन और इक्वल टू टाइप्स, वी हैव टेकन इनटू केयर by adding or subtracting slack and surplus variables, and we have ultimately reduced all the constraints to equality constraints, and we are assuming that A has the dimensions m cross n. Matlab now in all we have m constraints and we have n variables. So these variables include all, I mean the decision variables, the slack variables, the surplus variables, whatever were required. Okay, now just look at this objective function, maximize z equal to cx. Now if I give you two variables and I ask you to maximize it, if I ask you to maximize z, so somebody says, no, I am not very comfortable with maximizing something. I'm okay with minimizing that. So is there any relationship between maximizing z or minimizing something of z so that we arrive at the same result? क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछना चाह रही हूं? बोलो। मैम आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ जेड के बीच में रिलेशन पूछ रही हैं। हाँ, मतलब क्या, मतलब एल्जेब्राइकली या इक्वेशन में अगर मैं z को मैक्सिमाइज करूं, मैं कह रही हूं मैं z को मैक्सिमाइज करना चाहती हूं, तो एक्चुअली मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन एक ही चीज का कैसे हो सकता है? मतलब अगर मिनिमाइज है तो उसको मैक्सिमाइज में कैसे हम बोल सकते हैं? हाँ, सेम चीज। मैम जब तक मैम हमें एक्सट्रीम पॉइंट पता होना चाहिए। नहीं, forget about that. I mean in general, say, चलो कोई नहीं, शायद मैं समझा नहीं पा रही कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ। If I have to maximize z and I end up minimizing minus z, are they the same thing? Or यस मैम। if I have to minimize z, is it same as maximizing minus z? जेड। हाँ है ये, अब क्लियर होगा कुछ जो मैं कहना चाह रही थी? यस मैम। हाँ, इज इट ओके विथ ऑल? Yes, ma'am. बोलो हाँ या ना जल्दी। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर अगर हम कोई मेथड भी डेवलप कर रहे हैं, अगर हम किसी एक तरीके के लिए कर लेते हैं, चाहे हम मिनिमाइजेशन के लिए कर लें, चाहे हम मैक्सिमाइजेशन के लिए कर लें,
दूसरे के लिए तो उसका माइनस ही तो करना है. Supposing I prove something for minimization of z, then what will be the same proof will work for maximization of that, because maximization is nothing but maximization of minus z will be same as minimization of z. So since, because I have this relation with me, so I can do anything. मेरे को एक ही तो मेथड सीखना रह गया. बिकॉज अगर मेरे को सपोजिंग मेरे को मैक्सिमाइजेशन का मेथड समझ में आ गया, ठीक है, मैंने समझ भी लिया, मैंने उसका प्रूफ थियोरेटिकली डेवलप भी कर लिया, उसका प्रूफ भी बना लिया, उसका एल्गोरिथम भी बना लिया, लेकिन किसी ने मुझे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दे दिया, तो मैं क्या उसको उस मेथड से कर नहीं सकती? कर सकती हूँ ना. मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही तो चेंज करना है. उसने मेरे को मिनिमाइजिंग z बोला, मेरे को मेथड मैक्सिमाइजेशन का आता है, तो मैं उसे बोलती हूँ कोई बात नहीं, मैं अपना एक z स्टार डिफाइन करा विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ z, ठीक है, और मैंने इस z स्टार को मैक्सिमाइज कर दिया, तो बात तो वही रहेगी ना. यस मैम. So it's okay with me. So that is why this book follows the approach where all minimization problems are considered. So what I'll do is I'll start with some theorems on minimization, and accordingly maybe when we do problems we'll do of maximization, and maybe some theorems we'll do for maximization or minimization or combination, or I'll give you a hint for both kind of thing, because pata nahi exam mein kaisi aa jaye. Okay. So to prove this theorem, I mean, I've just written that for every basic feasible solution is equivalent to an extreme point. This is what we want to prove. Okay. So I'll just give you the basic hint as well as how to write the proof also. So what we do is we consider the linear programming problem. Again, now I am considering the minimizing type. Minimize z equal to cx subject to ax equal to b, x more than or equal to 0. Okay, where I say that A is m cross n and rank of A is m. Okay, now is this clear? That means there are m that means n minus m variables can be arbitrarily put equal to 0 and the remaining can be obtained. ठीक है ना? So I start with, I say let x be an extreme point of the feasible region. Let x be an extreme point of the feasible region. Okay. Now, what do you have to prove now? Because it's an equivalence that we need to establish. So it has to be a one-to-one correspondence between the two. So in the first part, we will prove that x is a, isko x aise hi le lete hain. We'll prove that x is a, can I write now BFS, which stands for basic feasible solution? Is it okay for this abbreviation? Otherwise, I'll have to Yes, write. ma'am. So we have to prove that x is a basic feasible solution of the system Ax equal to B. Yeah, this will prove one part. In the second part, we'll assume that x is a basic feasible solution of the system, and then we'll prove that x is an extreme point of the feasible region. So this will establish an equivalence between the two. Okay. Now, to begin with, we assume that now since there were m constraint n variables, I say let x be equal to a column matrix with n entries such that xi, each xi is more than or equal to 0. ठीक है. अब जो हमने अपना A लिया m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो A हमने लिया हुआ है ना इस तरह से, जैसे मैंने उस दिन समझाया था, A1, A2, AN, where A1 is what? The first column of A,
right? How many entries will it have? M, because A has to have M rows and N columns, right? So with this definition as A and with this definition as X, I can say that A1 X1 plus A2 X2 plus AN XN is equal to B, because मेरा system क्या है? AX equal to B. So here A1 is not just one scalar. A1 is a column, right? The first column of the matrix A. A2 is the second column of the matrix A, and so on and so forth. Is this clear? Because ये notations आगे फिर theorem भी तभी समझ में ही आएगा. ठीक है? Yes, ma'am. Now what we do is, because we are given that rank of A is M, ये हमें दिया हुआ है. So what we do is, we arrange the components of X such that, otherwise तो हमारे X में कितनी entries हैं? N entries. We arrange the components of X such that the first P components are positive, ठीक है, and the remaining are 0. ठीक है, अब वो कौन से P components, that is immaterial, but we have arranged them in such a manner that the first P are positive and the remaining all are 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने अपने X को, that means I have rewritten my X as X1, X2, XP 0, 0, 0. इस तरह से लिख लिया. ठीक है, so basically your xi is greater than 0 from I from 1 to P, and xi is equal to 0 for all I from P plus 1 to N. Is this clear? Now, because बिल्कुल वैसे ही केस हो गया कि हमने कुछ वेरिएबल्स को 0 पुट कर लिया, और बेसिकली ax इक्वल टू b जब किया तो हमारे पास सिर्फ वही वाले कॉलम्स ही तो A के कंट्रीब्यूट करेंगे जिनके लिए हमारे पास नॉन जीरो है X का वैल्यू. So that means I'm going to get is A1x1 plus A2x2 plus APxP is equal to B. अब इसको मैंने नंबर 1 कह दिया. ठीक है, अब ऑब्वियस क्वेश्चन कुड हैव बीन कि यहाँ M क्यों नहीं लिया, P क्यों लिया. ठीक है, अब मुझे क्या पता, बिकॉज सी अगर मैं M ले लेती तो ऑटोमेटिकली ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट थे ना, जिनको हमने नहीं लिया. तो इसीलिए अब हमको ये दो केस अलग अलग कंसिडर करने पड़ेंगे. केस 1 कंसिडर किया कि हमने ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि A1, A2, AP आर ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स. मतलब ये हमारे आए ही पाइवट कॉलम्स, राइट? तो अगर ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, दैट मींस x1, x2 जो भी थे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी ये थे वेरिएबल्स, ये सारे बेसिक वेरिएबल्स हो गए, बिकॉज ये सारे कॉलम, इसका मतलब बाकी के सारे नॉन बेसिक. हमने जो अभी पहले किया था, जब हमने निकाला भी x इक्वल टू बी इनवर्स बी भी निकाला था, तब हमने x को इसी तरह से डिफाइड किया था ना कि ऊपर वाले बेसिक वेक्टर्स थे, नीचे वाले नॉन बेसिक वेक्टर्स थे. तो अगर A1, A2, AP they are all linearly independent columns of A, that means x1, x2, xp are actually your basic vectors, basic variables. So if x1, x2, xp are basic variables, that means x is a basic feasible solution. इस केस में तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना. प्रॉब्लम तब आएगी, हमें क्या पता कि A1, A2, AP सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कुछ रहा ही नहीं प्रूव करने को. दैट मीन्स दिस केस वेयर वी अज्यूम दैट A1, A2, AP are linearly dependent.
then also we have to prove that this x is a basic feasible solution. तो अब इसको प्रूव करने के लिए इफ आई एम सेइंग दैट दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट स्केलर्स lambda 1, lambda 2, lambda p such that not all zero. इसी तरह से डिफाइन करते हो ना लीनियरली इंडिपेंडेंट, not all zero but such that lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda p ap is equal to 0. यही मतलब हुआ ना इसका कि नहीं? बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? नहीं तो मैं तरीका बदलूं कुछ. हाँ भैया, एक तो तुम्हारी शक्लें वैसे ही नहीं दिख रही, ऊपर से अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस मैम, यहाँ पे तो हमने लीनियर डिपेंडेंट की लगाई ना डेफिनेशन, जो हम कहते लगाते थे हमने वेक्टर्स में भी. हाँ हाँ वेक्टर्स में बिल्कुल हाँ, वही. वही स्केलर्स हाँ के साथ. वही किया. नहीं, ये तो चीज समझ में आ गई ना कि हमने दो केस जो अलग अलग लिए वो क्यों लिए. यस मैम, क्योंकि हम दो क्या हो सकते हैं कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट हाँ. हो या फिर नहीं, डिपेंडेंट हो. हमने क्या करा, बेसिकली रैंडम ले लिया ना, कि हमने रैंडमली कुछ p नंबर ऑफ कॉलम्स ले लिए a के, जिनके जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने x थे वो हमने नॉन जीरो अज्यूम किए और बाकी जीरो अज्यूम कर लिए. ठीक है. अब जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन जीरो अज्यूम किए, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग a में कॉलम्स थे, अगर तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हमारी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन अपने आप ही आ गई, बाय डेफिनेशन ही हो जाता. प्रॉब्लम तब आ रही थी जब वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो गए. तो लीनियरली डिपेंडेंट जब माने तो हमने लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन यूज कर ली, कि हमने अज्यूम करा कि लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स lambda 1, lambda 2, lambda p not all zero such that this is equal to 0. अब देखो, जब ये अब फिर देख लो इसको, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ, a1 a2 ap ये कॉलम्स हैं a के, ये सिंगल नहीं है, सिंगल चीज नहीं है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, दे आर ऑल कॉलम्स इन देमसेल्व्स. तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a1, अच्छा चलो पहले ऐसे लिख लो, इसका मतलब a1 a2 ap और इधर आ गए lambda 1 lambda 2 lambda p इज इक्वल टू 0. यही मतलब हुआ ना. अब यस मैम. बट मेरे ए में तो p कॉलम्स नहीं थे, टोटल में तो n नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो मैंने क्या करा, इसका मतलब मैं इसको a1 a2 ap और ap प्लस 1 और कहां तक ले गई an तक सारे कॉलम्स कंसिडर किए, और जब इधर लिखे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p तक तो लिख लिया, उसके बाद मैंने सारे जीरो लिख दिए. एक ही बात है, तब भी तो ये इक्वल टू 0 रहेगा. इज इट्स ओके? बाकी के लैम्डास मैंने 0 ले लिए, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p में नॉट ऑल 0 चाहिए ना हमें, p के बाद के जितने भी लैम्डास थे उनको मैंने 0 ले लिया, और a का पूरे डायमेंशन ले लिया, m क्रॉस n पूरा ले लिया. इज इट ओके? That means what? That Yes, means basically I have proved that a lambda is equal to 0, where lambda हमने एक और कॉलम मैट्रिक्स बना लिया जिसकी एंट्रीज क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p एंड बाकी सब 0. ये हमारा लैम्डा बन गया ना, एक और मैट्रिक्स आ गया हमारे पास लैम्डा, जिसको हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, और वो भी कैसा आया, सच दैट a लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखो, हमारे एक्साइज जो है, जो हमारा कॉलम हमने अपना x डिफाइन किया था, उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है xi या तो ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 टू p, एंड xi इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i फ्रॉम p प्लस 1 टू n. हमने ऊपर अज्यूम करे हैं ना इनके. ठीक है. नाउ फॉर i फ्रॉम 1 टू p, सिंस xi is strictly greater than 0, what we do is we choose
some real number epsilon greater than 0 such that this epsilon lies between 0 and another number eta, where this eta is nothing but minimum of, where we are saying eta is nothing but the minimum of xi upon modulus of lambda I such that lambda I is not equal to 0 for I varying from 1 to p. देखो, जहां पे xi 0 है उसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। हमने कौन से xi कंसिडर, कौन से i, कौन से इंडिसेस कंसिडर करे, ओनली फ्रॉम 1 टू p, ठीक है। उनमें क्या है, xi स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो हम कोई भी ऐसा एक नंबर चूज कर सकते हैं ना, कि और फिर क्योंकि ये स्ट्रिक्टली i फ्रॉम 1 टू p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड फॉर i फ्रॉम 1 टू p हमारे लैम्डास भी हैं, नॉट ऑल 0 but because they can their convex combination, their linear combination is actually 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस कंसिडर किया, क्योंकि कोई एक लैम्डा नेगेटिव भी तो हो सकता है, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी टेक द रेशियो ऑफ xi अपॉन मॉडुलस ऑफ लैम्डा i, किन के लिए, ओनली फॉर दोज i's for which xi is strictly greater than 0 and lambda is definitely not equal to 0 necessarily. और इसका जो मिनिमम आया, इन रेशियोज का जो भी मिनिमम नंबर है उसको हमने ईटा कह दिया, और अपना अपसाइलन ऐसा चूज करा कि वो 0 और ईटा के बीच में लाया करता है। कोई एक हमने ऐसा रियल नंबर चूज कर लिया, वी चूज अपसाइलन सच दैट दिस हैपेंस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा अरिथमेटिक है समझने वाला, राइट। नाउ इफ लैम्डा आई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मॉडुलस लैम्डा आई भी लैम्डा आई हो गया, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज epsilon is less than xi upon lambda I if lambda is strictly greater than 0, ठीक है। So epsilon is less than xi upon lambda I, which means that xi is actually greater than epsilon into lambda I, right? Or which means that xi minus lambda I epsilon is greater than 0. Is it okay for every I then? In that case, if lambda is strictly greater than 0, if lambda is strictly greater. Is this clear? अरे बोल तो दो। Is this okay or not? Yes, ma'am. Now, if lambda I is strictly less than 0, then epsilon will be less than, lambda I negative हो गया, ठीक है, तो modulus of lambda I लेना था, so that means epsilon will be less than xi upon minus of lambda I, तभी तो modulus positive बनेगा if lambda I is less than 0, ठीक है ना। That means what? That means xi is greater than minus lambda I epsilon, which means xi plus lambda I epsilon is greater than 0 for every I. ठीक है? So if lambda I is strictly more than 0, then we have this relation. And if lambda I is strictly less than 0, then we have established this relation, that xi plus lambda I epsilon is strictly more than 0. Okay. Now, what we are going to do is, we are going to prove, see, हमें actually prove क्या करना है, कि हमने start करा basic feasible solution से, हमें prove करना है कि वो correspond करती है किससे, एक extreme point से, और इसलिए हमने extreme point की definition भी दी थी। definition क्या कहा था extreme point में, कि अगर एक point है और
एक लाइन सेगमेंट है जो उस पॉइंट से पास करती है, और वो पॉइंट उस पॉइंट से पास करती है, तो वो पॉइंट अगर उसका एंड पॉइंट है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट है. ठीक है. अब अगर हम somehow, since we have to prove that this is an extreme point, so if we are able to prove by definition of extreme point, it's fine. But if we are able to, if we reach at some contradiction, तो we'll end up proving that कि ये linearly dependent हो ही नहीं सकते. They have to be linearly independent. उस केस में basic feasible solution था ही था. Right? So to do that, what we do is we randomly pick up any 2 points. Let x1 and x2 be any 2 points. कोई भी हमने ले लिया अपने x में से. ठीक है. और ऐसे कैसे लिए कि हमारा x1 जो है उसको हमने डिफाइन करा xi minus lambda I epsilon for I from 1 to p and 0 otherwise. That means 0 when I varies from p plus 1 to n. ठीक है. तो इसका मतलब x1 कैसा बना? अगेन अ कॉलम वेक्टर. कैसा? x1 माइनस लैम्डा 1 एप्सिलॉन, x2 माइनस लैम्डा 2 एप्सिलॉन, कहां तक? xp माइनस लैम्डा p एप्सिलॉन, और उसके बाद सारे जीरो. ये तो हमने x1 डिफाइन करा. इसी तरह से हमने एक और पॉइंट लिया x2, बिकॉज ये तो सारे n डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे, हमारी स्पेस ही अब n डायमेंशनल है. तो हमने x1 तो ऐसे डिफाइन करा और x2 को दूसरी तरीके से डिफाइन कर दिया as xi plus lambda I epsilon for I varying from 1 to p and 0 for I varying from p plus 1 to n. ठीक है. अब ये हमने अपने दो वेक्टर्स डिफाइन कर दिए, x1 एंड x2. अब देखो, x1 एंड x2 दे आर बोथ मोर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. या तो 0 है या पॉजिटिव है. ठीक है. दूसरा, मैं अपने x1 को कैन आई नॉट राइट एज x माइनस लैम्डा एप्सिलॉन? लिख सकते हैं ना? Can I, and x2 can I not write as x plus lambda epsilon? लिख सकते हैं कि नहीं? See, x1 is not one element, तभी इसको मैंने कैपिटल x1 लिखा है. See, It is a set. x1 is actually x1 minus lambda 1 epsilon, x2 minus lambda 2 epsilon, कहां तक? xp minus lambda p epsilon. और उसके बाद की सारी एंट्रीज मैंने कैसे ले रखी हैं? 0 0 0. तो अब 0 0 0 लिखूं या 0 माइनस लैम्डा p प्लस 1 एप्सिलॉन, 0 माइनस 0 टाइम्स, इसी तरह से डिफाइन कर लिया ना मैंने. तो अब अगर ये मेरा वेक्टर है तो इसका मतलब मेरा एक x तो यही था, x1 x2 xp 0 0 0, यही तो मेरा x था. इसी तरह से मेरा लैम्डा क्या लिया मैंने? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p 0 0 0. तो isn't it same as x minus lambda epsilon? Yes, Similar, है. x2 is nothing but x plus lambda epsilon. ठीक है. So now A was an m cross n matrix. तो अब मैंने क्या करा? मैंने निकाला अपना AX1, which is nothing but AX minus lambda epsilon. ऐसे लिखा था, but epsilon scalar है. That means I can write it as AX minus epsilon A lambda. But A lambda तो अभी हमने प्रूव करा था 0 है. That means AX1 is nothing but B minus 0, which is B. Because हमने अभी ऊपर लिखा. If you just go back to your equation, equations अब हमने इसमें कौन कौन सी यूज कर ली? देखो, अगर हम वापस चलें तो
हमने ये यूज करी दैट a लैम्डा इज 0, ठीक है ना, और जो हमने शुरू में ही ली थी कि ax इज इक्वल टू b, ठीक है ना, वो तो हमने माना ही था, ax तो इक्वल टू b था ही गिवन हमारे को, राइट? सो वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड दैट ax1 is equal to b, ठीक है. Similarly, what will be ax2? Again, that is nothing but a into x plus lambda epsilon, which I write as ax plus epsilon a lambda, which is b plus 0, which is nothing but b. That means what? That means हमारे पास x1 x2 दो ऐसी solutions आ गए which are feasible. इस सिस्टम को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ax1 equal to b and ax2 equal to b, और x1 x2 भी इसी तरह से डिफाइंड है कि they are strictly more than or equal to 0. So that means x non-negativity restrictions भी satisfy कर रहे हैं. So that means x1 and x2 are feasible solutions of the system ax equal to b. ठीक है. अब जिस तरह से हमने अपना x1 और x2 डिफाइन करे हुए हैं, x1 क्या है? x माइनस लैम्डा एप्सिलॉन, और x2 क्या है? x प्लस लैम्डा एप्सिलॉन. सो इजंट योर x इक्वल टू हाफ x1 प्लस हाफ x2 इन दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए तो यही तो है हमारे. सिंस x1 is this and x2 is this, this implies x is nothing but half x1 plus half x2. That means x is what? x1 plus x2 by 2. That means x is what? The midpoint of x1 and x2. यही मतलब हुआ ना इसका. That means x is the midpoint of x1 and x2. That means what? X is not an extreme point. ठीक है ना. बट ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने स्टार्ट ही उससे किया था, लेट x बी एन एक्सट्रीम पॉइंट, which is a contradiction. Which is a contradiction because we assume we started with x as an extreme point and we were to prove that x is a basic feasible solution. So that means what? That means our assumption that a1, a2, ap cannot be linearly dependent. This assumption is wrong. We assume that a1, a2, ap are linearly dependent. And using that linearly dependence condition, we have arrived at a contradiction. That means they cannot be linearly dependent. That means the only possibility is that A1, A2, AP are linearly independent. And in that case, we have already proved that X is a basic feasible solution. So nothing left to prove now. So one part is simple, where we proved that. So therefore, if X is an extreme point, then X is a basic feasible solution. Now we have to prove the converse. That means converse, we'll assume that X is a basic feasible solution. Okay. And we'll prove that X be an extreme point. So we'll be left to prove that X is an extreme point. अब तुम्हारी क्लास किसकी है?
यस मैम। मैम इसके बाद नहीं है क्लास। किसी की भी नहीं है। किसी की भी नहीं है तो फिर आगे कर लें प्रूफ इसका कंप्लीट। हाँ, नहीं तो कल करूंगी, जैसे बोलो। आई एम ओके विद बोथ। मैम कल करा देना। गुड फॉर मी।